Foreign Secretary Misri, he held a press interaction. In the press briefing, whereas the whole job was done by the Indian Air Force, he did not even mention it. He said that it was the Indian Armed Forces which did the operation. When I connect the dots, one jet has crashed with the parts all scattered in Pampore, which is South Kashmir. That 3 such similar instances have been reported in Jammu and Kashmir. So we are talking now of 4 jet crashes where the Indian Air Force personnel were present, but the very fact that the Indian Air Force personnel were present there is something that needed to be explained by Foreign Secretary Misri, but he ignored the whole thing. If the Indian Air Force this time it breaches the Pakistan airspace, then the response from the other side will be hard and swift. It will lead to an escalation that neither side will be able to control, and it will be an all-out war. दुनिया मान गई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की पावर ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन भारत में मौजूद चंद खोते या अक्सरियत खोतों की वो नहीं मान रही, या फिर पाकिस्तान में मौजूद चंद सियासी गिधे खोते जिन्हें मैं कह सकता हूँ वो नहीं मान रही, या फिर बैरूने मुल्क मुकीम चंद ऐसे पाकिस्तानी हैं जो सोशल मीडिया पर अभी भी इस वक्त इस सिचुएशन में भी पॉइंट स्कोरिंग करके और अपना स्कोर सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबूत हाजिर हैं, मजीद सबूत दे देते हैं, और वो सबूत भी कोई आम शख्स की जुबानी नहीं, प्रवीण सुहाने जो के एक वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, दुनिया भर उन्हें मोतबर मानती है, भारत में इस वक्त इताब का शिकार हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने एक फुल फ्लेज पॉडकास्ट किया जिसमें उन्होंने करंट सिचुएशन के बारे में डिटेल में जिक्र किया। प्रवीण सुहाने साबिक इंडियन आर्मी ऑफिसर भी रह चुके हैं और अपनी कई किताबों में ऐसे ऐसे सच लेकर सामने आए हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार की आंखों में वो खटकते हैं, लेकिन इस वक्त भारत में बैठकर वो सच बोल रहे हैं। और अब मजीद कई आवाजें भी निकलकर सामने आ रही हैं जो पिछली वीडियो में हमने आपको कुछ बताई थी। आज की इस वीडियो में प्रवीण सुहाने की जुबानी आपको बताएंगे कि वो क्या कहते हैं। प्रवीण सुहानी ने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट की जिसमें उन्होंने ये लिखा, बिग लेसन फॉर ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर भारतीय जश्न मना रहे हैं। उन्होंने भारतीयों के लिए इस ऑपरेशन को एक सबक करार दिया है। फॉर द आईएएफ is to seriously consider Su-57 plus the entire package offered by UAC with it। अब इसका मतलब यह है कि वो बता रहे हैं कि ये एक सबक है इंडियन एयरफोर्स के लिए कि उन्हें Su-57 अब ले लेना चाहिए, पूरा उसका पैकेज। फिर उन्होंने उसके बाद एक डिटेल्ड वीडियो की जिसमें उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया जो भारतीयों ने बड़े शानदार तरीके से सजाई थी कि हमने पाकिस्तान में हमला कर दिया है, ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट किया है। उसमें उन्होंने कई सवाल उठाए जिसमें मेन सवाल ये था कि तुमने जवाब क्यों नहीं दिए, क्योंकि अगर तुम वहां पर जवाब देते तो वहां पर इंडियन जर्नलिस्ट तुमसे ये सवाल पूछते कि पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है, ऑफिशियली कर रहा है, और जर्नलिस्ट के सवाल लेकर कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में जा जाकर उनके मिनिस्टर्स बातें कर रहे हैं कि हमने इंडियन एयरफोर्स के 5 जेट्स कर गिराए हैं, लेकिन तुम हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर फौरी तौर पर भाग गए, किसी का तुमने सवाल नहीं दिया, ना ही एक्सप्लेन किया है कि इंडियन एयरफोर्स का जो नुकसान हुआ है वो कितना हुआ है या नहीं हुआ इवन, यानी बिल्कुल खामोशी है भारत की तरफ। तो फिर उन्होंने अपने ही मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया की वो न्यूज और वो रिपोर्ट्स बताई हैं, ये पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, और उसके आफ्टर मैच में ये नुकसानात यहाँ के लोकल जर्नलिस्ट क्लेम कर रहे हैं कि 3 जहाज हमने कश्मीर के मुख्तलिफ एरियाज में क्रैश होते स्पॉट किए, और एक बठिंडा यानी भारतीय पंजाब में उनकी पंजाब एयरबेस के करीब एक जहाज गिरा है जो मोस्ट प्रोबेबली राफेल के बारे में बात की जा रही है। तो यह है वो एक सबूत जो वीडियो में आपको दिखाते हैं ताकि आपका भी दिमाग क्लियर हो, और उन खोतों से जरूर शेयर कीजिएगा जो इस वक्त भी स्कोर सेटल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस वक्त पाकिस्तानी कौम को एकजुट होने की जरूरत है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। What happened was that in the daytime, Foreign Secretary Misri, he held a press interaction. It was not an interaction, a press briefing, because he never took any questions. In the press briefing, whereas the whole job was done by the Indian Air Force, he did not even mention it. He said that it was the Indian Armed Forces which did the operation. And according to him, the operation was measured and it was non-escalatory. Now all this requires a bit of explanation, but let me start with why did he say armed forces and not Indian Air Force? When I connect the dots, I see that India Today television with Gaurav Sawant as the anchor, they do a video in the morning, early morning, where
their man on the ground, he says that the Srinagar airport has been closed, the civilian airport, and one jet has crashed with the parts all scattered in Pampore, which is South Kashmir. And he said that the Indian Air Force personnel have come, Indian Air Force commandos have come, and they have cordoned off the whole area. And then he also said that 3 such similar instances have been reported in Jammu and Kashmir. That means in J&K, a total of at least 3 jets crashed on the night of 6-7th May. And everywhere the Indian Air Force personnel were there. Similarly, news came in the Indian Express and the Hindu newspaper, which of course Hindu withdrew that news in about 45 minutes, which said that one jet had crashed near Bhatinda Air Force Base. 1 person died and 9 were injured. So we are talking now of 4 jet crashes where the Indian Air Force personnel were present. It was not clearly said whether this was, what flights were these, were they the fighter jets, but the very fact that the Indian Air Force personnel were present there is something that needed to be explained by Foreign Secretary Misri, but he ignored the whole thing. Why he should have explained this? Because on the other side, the Pakistan Air Force made these claims that we have downed 4 or 5 of Indian Air Force fighter aircraft. This claim has been made. So it was the responsibility, if you're talking of you're having a media interaction, you have to bring up this subject. How is it that on 6th, 7th night, this coincidence happens in Jammu and Kashmir and in Punjab? But he said, while not taking any questions from the media, that look, the operation is still going on. I don't think so. The operation is over. Because if you look at the claim made by the Pakistan Air Force, they have already accomplished what they had set out to accomplish. There's nothing further for them to accomplish. There is plenty for the Indian side to explain. Now, next, as I said, he spoke about non-escalatory. Now, there is nothing non-escalatory about the Indian Air Force or Indian or air power anywhere in the world. If you see the core competencies or the key characteristics of Air Force, they are all escalatory. Because the key characteristics of any Air Force are range, then it is flexibility to quickly move from one theatre of war to another theatre of war. Then it has today's standoff weapons that can shoot from long ranges. Then it has a whole range of technology for real-time situation awareness. So the point to make here is that Air Force is escalatory in nature. It needs to be used employing the core competencies optimally. Why? I will explain in a while. The other word that he used was that the response was measured. Of course it was measured. As I have said in my earlier videos also, that if the Indian Air Force this time it breaches the Pakistan airspace, then the response from the other side will be hard and swift. It will lead to an escalation that neither side will be able to control, and it will be an all-out war. Because if you see what happened in 2019 in Operation Bandar, they were caught unaware, and next day the Pakistan Air Force, it responded with Operation Swift Retort, and we know what happened during the Swift Retort. Now,